Dear students, in this session I am going to discuss short answer question number 2. How does Twain speak out against learned behaviors that adults abide by in the name of cultural conformity? Short answer question number 2, another workbook solution. Do check the first answer as well. All the links are provided in the pinned comment section or the description box. So, the introductory statement, very important. Let us see what I have written. And what is asked here? How does? So, how does Twain? What are the techniques used by Twain to expose the figures of authority in the essay? So, this is a thematic question as well as a technique based question. You will have to analyze the technique used by Mark Twain. How or what technique does he use to highlight the theme of the essay? Introductory statement देखो, the tone of advice to youth is satirical, critical comment. How does? So this is a technique. This is a satire. The tone is satirical. So this is simple. And then the introduction is interesting. When I uploaded the easy explanation video, I had asked you to learn this section. अगर तुम ये section learn by heart कर लेते हो, तो half of the problems regarding advice to youth will be solved. इस section से you will be able to frame your answers. Introduction हो, body हो, conclusion हो, थीम हो, सब कुछ इस सेक्शन में मिल जाएगा. एंड आई हैव डन दैट एग्जैक्टली. देखो, मार्क ट्वेन प्लेज ऑन द इनिशियल assumption ऑफ द रीडर दैट द essay वुड बी अनदर बोरिंग लाइफ लेसन. तो जब रीडर्स एडवाइस टू यू टाइटल पढ़ते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, आई होप दैट दे फील दैट दिस इज अनदर बोरिंग लाइफ लेसन. एडवाइस देने वाले हैं मार्क ट्वेन, but he plays on it, he twists it, he adds a twist by twisting it with satire and humor techniques. Direct technique wala answer hai ye, and the examiner again will be impressed with you through suggestion, innuendo and paradox. Do check the explanation video, easy explanation video. मैंने सब कुछ in detail वहाँ पे explain कर दिया है. Through suggestion, innuendo, paradox, he speaks out against learned behaviors that adults abide by in the name of cultural conformity. So, again, directly related to the question. Question में जो words है, मैंने वैसे ही उन्हीं वर्ड्स को यूज करके अपना इंट्रोडक्शन फ्रेम कर दिया है. तो इससे क्या पता चलता है? दैट आई हैव क्लियरली अंडरस्टूड द क्वेश्चन, और ये एक रटा हुआ आंसर नहीं है. आई हैव रिटन द आंसर इन माय ओन वर्ड्स. सो अडैप्ट एंड एडजस्ट योर स्टाइल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस अवेलेबल. एग्जामिनेशन में जो स्पेसिफिक वर्ड्स से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है, उसी वर्ड्स को एक दो बार आंसर में जरूर यूज करना. एंड यू विल सी द मैजिक, यू विल सी द डिफरेंस. बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं. आफ्टर दिस चेंज द पैराग्राफ. सो दिस इज द टेक्निक, द क्रिटिकल कमेंट, और हमें एक्सप्लेन भी करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है. दिस इज अ रेफरेंस मटेरियल, इसीलिए मैंने 3-4 एग्जाम्पल्स, शायद 6 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे यूज किया है. तो तुम according to time management and according to your own needs इस आंसर को फ्रेम कर सकते हो. जो भी एग्जाम्पल तुम्हें अच्छा लगता है, you can use it 2 or 3 in your answer. So again, 1 page. 5 marks के लिए मैं 1 page से ज़्यादा नहीं लिखने वाली हूँ, no matter what. So first example, when Twain speaks about selective obedience to parents as the best policy in the long run, and always use quotations, 5 marks, 10 marks, जो भी हो. Use quotations, add critical comments. So quotation finished. Sarcasm, critical comment is suggested. Suggestion towards the parents who are socially conditioned to believe that any kind of disobedience is non-conformity to predetermined social norms. So this is the explanation.
पेरेंट्स, लर्नेड बिहेवियर, पेरेंट्स को भी सोशली कंडीशन किया गया है. सो दिस expression again and again, I keep on repeating this, is very important. पेरेंट्स को भी सोशली कंडीशन किया जाता है उनके बचपन से. पेरेंट्स आर द फिगर्स ऑफ ऑथोरिटी एंड द चिल्ड्रन must obey them. So according to this social conditioning, this learned behavior, they believe that any kind of disobedience is non-conformity to social norms. So this is one example. And what is the technique used? Sarcasm. I hope I have made myself clear. तो मैंने टेक्निक एक्सप्लेन किया है और कहाँ कहाँ टेक्सचुअल रेफरेंस इज कंपल्सरी. टेक्स्ट में कहाँ कहाँ क्या क्या टेक्निक यूज किया गया है तुम 2, 3 या 4 अकॉर्डिंग टू योर ओन अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड्स तुम यूज कर सकते हो. ठीक है. सो फर्स्ट एग्जाम्पल फिनिश्ड. By humoring that superstition, ये एक superstition है. By humoring that superstition will give the parents a sense of complete control. So by humoring that superstition, the young people will give the parents a sense of control. Finished. Sarcasm है, humor है, और ये एक सुपरस्टिशन है. आयरनी भी है. सुपरस्टिशन इज बीइंग यूज्ड ironically. This word superstition is used intentionally by Mark Twain to expose the hollowness. तो सेकेंड जो मैंने एग्जाम्पल यूज किया है वो लार्क का है. लार्क इज द बेस्ट थिंग टू गेट अप विथ as this will make the figures of authority to believe that the young are early risers. They are disciplined, giving a splendid reputation. तो figures of authority, ये लोग socially conditioned कैसे हैं? They believe that one must go to bed early, one must get up early, but the young people can twist that. They can have a splendid reputation of being a disciplined person, the young person, by training the lark. By getting up with the lark. Lark भी देर से उठेगा और जो young person है, जो young people है, वो भी लेट तक सो सकते हैं. In this way, again, Mark Twain is questioning the cultural conformity that you must be punctual in getting up and in going to bed. फिर मैंने बॉस्टन मॉन्यूमेंट का जो एग्जाम्पल है, जो मेंशन है, उसे यहाँ पे हाईलाइट किया है. क्यों? इज यूज टू ब्लास्ट. ब्लास्ट शब्द से ही हमें पता चल रहा है ही इज एक्सपोजिंग. मार्क ट्वेन इज एक्सपोजिंग द हॉलोनेस ऑफ द लेसन टॉट दैट द यंग ऑट नॉट टू लाई. जो यंग पीपल है, जो एडल्ट्स है, वो हमें क्या सिखाते हैं? डोंट लाई. रियलिटी में क्या देखा गया है? A lie well told is immortal. और बॉस्टन मॉन्यूमेंट जो है is a clear example of that. After this, another example. This is optional. यूज कर सकते हो या तुम यूज नहीं कर सकते हो. यूजिंग कैरिकेचर इमेज, ह्यूमर के साथ. दिस इज अगेन अ क्रिटिकल कमेंट. कैरिकेचर इमेजेस, जो ग्रैंडमदर ग्रैंडसन का इंसिडेंट है with a rusty gun. Twain questions the use of weapons since time immemorial. पहले से ये जो weapons invent किया गया है, ये बहुत खतरनाक है for the civilization of mankind. And if you use the weapons irresponsibly, more destruction can be caused. Again, the ending of the essay sarcastically hits at the lack of uniqueness as a function of adherence to cultural conformity. अगर हम इन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, कॉन्फॉर्मिटी का मतलब फॉलो करना, ब्लाइंडली फॉलो करना, तो हम क्या देखेंगे? We will lack originality and uniqueness. The essay ends on a sarcastic note. So I have mentioned a lot of examples. You may select any 3 or 4 of your choice. और एक तुम अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है, तुम और कोई एग्जाम्पल साइट करना चाहते हो तो ये भी मेंशन कर सकते हो. लाइन is a gracious and beautiful art. देखो, how with the help of irony, this is irony, this is satire, paradox.
and his regret for not beginning to learn the art earlier. Hyperbole, irony, humor is also technique used to speak out against the learned behaviors that adults abide by in the name of cultural conformity. So this is a social conditioning of the adults, and they want the young people also to follow that social conditioning. So dear students, this is the end of question number 2, short answer question number 2.